Welcome back, folks, as the action resumes. You are watching the eISL Season 2, brought to you by Nordwin Gaming. Of course, it is Saturday, and we have three games lined up for you. In fact, one of which is already over with a victory for FC Goa as they march up again, dominion, just establishing their dominion, especially on the leaderboards. I sit at 18 points, which is preposterous. But now we are up to our second game. My name is Fixes. I'm joined along with TTR, where Chennaiyin FC, they're going to be hosting Odisha FC. And for all you FIFA viewers out there, it is, Utkal Divas from Odisha, which is the auspicious new year. That's April 1. Of course, it's an April Fool's for you, but we celebrate it. So we say Bande Utkal Jane. And that being said, I'm joined along with TT, like I said, and let's take a quick look at the matchups as we see what's going to happen, who's going to go up against who. It's going to be Naveed beginning his matchup against Nate, and we've got Tikka taking on Bhagya. So a little bit of a change in order for Odisha FC. Let's hope today, on this very auspicious day, they managed to break the deadlock, but it is not going to be easy because it is against the defending champions, that is Chennaiyin FC. For sure. And शुरू करते ही ओडिशा वासियों, हैप्पी न्यू ईयर टू यू. एंड उसी जगह पे आज मैं तो चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग जो है वो टक्कर दे पाए. एंड वो टक्कर देना इतने इजी भी नहीं होगा क्योंकि चैंपियन अभी के लिए जो चैंपियन है eISL के नवीन वो खेलने वाले हैं. एंड उसी के साथ पिछले सीजन के जो फाइनलिस्ट है वो भी इधर कहीं नहीं खेलने वाले हैं उनके ओपोनेंट पे. एंड ऑन द अदर हैंड ओडिशा एफसी का अभी तक फॉर्म उतना खास नहीं गया है और वागिया का जो वागिया है वो भी उतना उनका साथ नहीं दिया है. तो काइंड ऑफ आज सब कुछ जो है वो हो सकता है ऑन द लाइन आ जाए क्योंकि महीना चेंज हो चुका है, मार्च से अप्रैल आ चुका है. तो देखते हैं कुछ अलग होता है कि नहीं. फाइनेंशियल ईयर भी बदल चुका है. जो भी है उससे बहुत कुछ जो है वो इफेक्ट आ सकता है मे बी. एंड सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जरूरी है कि इधर कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपका नहीं रहेगा फिर आप कुछ भी प्लान कर लो वो टाइम लाइक प्लान के मुताबिक नहीं जाता है. कॉन्फिडेंस लाओ एंड बोलो कि यस हैप्पी न्यू ईयर एंड उसके बाद चालू करो खेलना. जय जगन्नाथ बोल के खेलो और आगे चलो, आगे बढ़ो. And for the Odisha fans, like they said, Godi chalo, Madi chalo. That's how the slogan should be for the Juggernauts, because I think a must-win game for Odisha FC at this point if they want to keep their hopes of making to the playoffs really alive, because so many games already played and still not even a single point that has been collected for this club. So today they'll be hoping for a better start. And against Chennaiyin FC, who came in as the defending champions, but haven't shown that champions instinct yet, right? In fact, Naveen, we haven't seen the best out of him, and both the teams have fucking else from the clubs that they went up in their previous matchup. For Chennaiyin FC, it was a tough one against FC Goa, and then for Odisha FC, it was clobbering time for Bengaluru FC, who comfortably managed to defeat them. But now, Chennaiyin FC, they're going to be playing left to right. We've got Naveen in his white kit, where Odisha FC, they're going to be responding in their from right to left in their typical black. एंड स्टार्टिंग देखिए, ओहो ये इस तरीके का कुछ शार्प स्टार्टिंग जो है वो जरूरी था. बाकी कन्वर्जन नहीं दिखा वो अलग बात है, बट वो आ जाएगा आई थिंक टाइम टू टाइम. सिर्फ 10 मिनट हुआ है मैच चालू होते हुए. एंड उसके बाद एक बहुत क्रूशियल पोजीशन पे एक बार फिर से बॉल जीतते हुए रोनाल्डिनियो एज ऑफ नाउ लेफ्ट हैंड साइड से खाली थे, बट फिर भी जो पास है वो पहुंचा नहीं पाए अपने प्लेयर तक. बट ओह माय गॉड व्हाट अ बॉल. बट वर्जिल वैन डाइक ऑलरेडी मौजूद थे कवर करने के लिए. Yeah, he certainly was there to cover, and that's something that you have to watch out for. And that was a nice pass. Was that an L2 pass? Because we haven't seen more of those passes in this year's eISL. We haven't seen those flare passes, to be honest, a lot. Not a lot of back heels, not a lot of those ones where we kind of caught off guard. But nevertheless, now we've got Naveen. That's a good build up until the point he decided to pass towards
Jairzinho there. But now with Ronaldinho, takes a shot and he scores. Just getting that right angle. And Nate, complaining about something, maybe his defenders just gave him that much room. Look at that pass. And little bit of a skill move there. Just No. trying to, play with the minds of Virgil van Dijk. And that is all the difference that was needed over there. And from here onwards, Odisha FC again on the back seat. How do they come back from here? बहुत टफ सिनेरियोस बनते हुए इधर. बढ़िया. Gimme towards Bellingham and Chennai NFC. शुरू थोड़ा बहुत डगमगाहट भरी हुआ था, लेकिन 20 मिनट पहुंचते पहुंचते गोल भी स्कोर कर चुके हैं. दूसरे के लिए आगे बढ़ते हुए व्हाट अ ड्रिबलिंग, लेकिन रोनाल्डिनियो तक नहीं पहुंच पाए. तो बहुत ज़्यादा शानदार एक इंटरसेप्शन देखने के लिए मिला था. बट केविन डे ब्रुयना, यूजुअली हम लोग देखते हैं कि एज अ सब उतारा जाता है केविन डे ब्रुयना को, लेकिन इस बार स्टार्टिंग कराया गया है. बीचों बीच से मेसी का रन, लेकिन एम्बापे के साथ फिनिश करने की कोशिश. डिफ्लेक्शन में मेसी एंड मेसी फिनिश कर देंगे. कोई भी गलती इधर नहीं होगा एंड इक्वलाइज कर चुके हैं नाइट. ओडिशा एफसी जान में जान आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में कंसीड किए थे, उसके बाद एक गोल इक्वलाइज करना जरूरी था. तो फाइनली न्यू ईयर अभी भी बहुत खुशहाल हो सकता है. Oh, it certainly can be. And look at that, right? It was the perfect way where he, just went in for the shot with Mbappe. And, I kind of always urge the players that, just go for a shot there. And more often that goes. But it was again coached by Lionel Messi after that deflection from the keeper. So was the power of the shot, right? Really difficult to instantly hold it out. What could have been done was maybe just put it out of play and go for a corner. But again, it's not something that you can cuss Naveen about, right? This is something you can't do. That's how it is all set in play. But for now, what Naveen can do is try to make a comeback into this game. But a huge sigh of relief for 8-net, at least, still keeping things tied up, managing to find a crucial equalizer. Look at that play being made from that right wing. But I think Naveen instantly just smelled that attack and managed to keep it off at bay. And now with Ronaldo has a lot of passing options to Ronaldinho, but could have given it a little behind so that, he could have not had the problem to face the keeper head on, as the keeper did not have a lot of trouble in just getting it into his grasps. But for now, again, Nate, he's trying to build up his attack. What we anticipated was he would something, sort of try to play it through the wings, but instead he wanted to keep it around the midfield a little bit more and try and get his players back into position and start up with the set plays there. But no, again the possession, it's just going like a pendulum back and forth. Sometimes it's Nate and then Naveen. It's quite equal so far. Wouldn't say one has been dominating the other. Both the clubs have been creating their own fair share of chances. It's just about finding that breakthrough. And he charged his keeper there. And a very vital save for Odisha FC. Yes. बहुत ज्यादा वाइटल सेव था, क्योंकि जिस जगह पे पहुंच चुके थे बॉल को लेके, उधर से कमबैक करना बहुत बहुत ज्यादा टफ था. बाय द वे, अभी के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे कैप डेविया टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो. क्लीट, एम्बापे, ओह, ये डिफ्लेक्शन था या जिसकी वजह से गोल में नहीं रहा. That was one of those shots. Had that gone in, would have definitely featured. Oh, there you could see Ronaldinho wanted to get in with that skill move, but now looks like a potential counter attack. But not a lot of attacking men were present, so hence the ball finally
gets shunned out, and here it is, halftime marker. We arrive, and there you can see both the clubs are equalized, and both the clubs have been kind of going on with the similar style of FIFA. Both the clubs have had their few defensive lapses, out of which goals were scored. For Nate, you would feel a little sad because Ronaldinho just made a swift turn and then he went for that shot, right? So that was very difficult to read. But what was really impressive was the way Nate answered back. A very well-built attack directly went on for a shot on with Mbappe, was deflected and poached by Lionel Messi, who knew where he had to be. And with the Team of the Year cards, your awareness is such, you get into good attacking positions always with these cards, and more often than not, you're right at where you should be, and in turn helps in scoring a lot. Because trust me, guys, I have played with, not with these cards, but with cards that are worse than this, and get so tough. You have to constantly put in that effort to get your players into the right position, hope that they have that attacking mentality, and even the work rate matters a lot. Suddenly you see, even the likes of big cards where you've got some nice stats on them, and then you see low attacking rate. So mostly with the midfielders, we've seen them fall. So as a result of which, the cards are not priced that high. One of other reasons where somewhat similar reason, like we had the debate, being sparked up why Pele was not used as a starter, right? That 4-star factor comes into play a much at the highest level of FIFA, right? And that's one of the reasons why Ronaldo R9 is so expensive and Pele is not. Merely at 5 million, which is still a very high amount, but R9's just crossing 12, 13 millions. That's just absurd. Yes. And with Ronaldo, वो एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रॉपर पोजीशनिंग के मामले में भी रोनाल्डो बहुत सही है, लेकिन उसी जगह पे टर्न किए थे मेसी, लेकिन फिनिश नहीं करने दिया गया उनको. ओडिशा एफसी बीच बीच में जब भी मौका मिल रहा है तब भी अटैक पे जाने में बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे. अटैक पे जा रहे हैं एंड प्रॉपरली चार्ज कर रहे हैं इधर नवीन को. नवीन के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है अभी तक, लेकिन उसको पूरा ही शिफ्ट करने की कोशिश एक गोल के साथ. क्या वो करके दिखा पाएंगे? हकीमी चार्ज किया गया था हकीमी के ऊपर, एंड्रू डुलीट फाउल कंसीड करते हुए, एंड उससे जगह पे रोनाल्डो मौका बन रहा है इधर फिक्सेस. Oh, there was an opportunity in the making for sure, but just went for a few ball rolls there. Just trying to find the perfect angle, and I felt he could have gone for maybe a few skill moves, a little L2 fake shot, and then could have gone in. But sometimes, when you're kind of building up that attack, you have got very less time to think your strats through. You have a set play in motion, which you try to execute. If it works, it works. But for now, this could really work for Nate, as Virgil van Dijk just did not let go, right? It was a very tight situation, and had the ball been let loose, then could have been a case where we could have seen a goal coming out of Nate, and a very crucial one at that. But now, as things stand, with Bellingham quick passing towards Ronaldinho, an Elastico performed, but the ball possession lost away, and could have been punished and can still be. Needs to trigger that run towards Lionel Messi. You see, two defenders charging, one of them blocking the passing lanes, and this happens when you kind of tend to go for those counter attacks. But right pass towards Messi, and he will make no mistake. And Odisha FC, I don't know after how long, I'm witnessing that, have finally managed to get a lead, and at such a crucial time marker. And this is it. 8 minutes needed to give his team that edge, and seems like he has given that. But the question still remains, can he hold on to it? Can he get a third? Or is it going to be Naveen who manages to clutch it out and can salvage a draw or maybe a possible winner? वाह, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बार बार जब भी मौका है चांस बना रहे थे, लेकिन द सेवियर कोर्तुआ फाइनली अपना काम करते हुए, एंड जो डिफरेंस है वो अभी भी बना के रखे. अगर इधर गोल कंसीड कर जाते
तो वो शायद कुछ मिनटों का खुशी होता ओडिशा एफसी के लिए, लेकिन इस सेव के बाद जो खुशी है वो दुगना हो चुका है, क्योंकि कोर्तोआ ऑन फायर। यूजुअली वैंडेसार को यूज किया जाता है, बट वैंडेसार का भी अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग जो है वो 92 है, बट कोर्तोआ टीम ऑफ द ईयर कोर्तोआ 96 रेटेड है। बट वो कभी कभार हम लोग देखें जो रेटिंग्स है वो कीपर के ऊपर कभी कभार जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, कभी कभार अजीब से गलतियां भी कर देते हैं, और कभी कभार इतना शानदार सेव कर दे कि पता ही नहीं चलता, और वो शानदार सेव में से ये एक था कोर्तोआ का। बट चेन्नई एफसी इतना इजीली हार मानने वाली टीम तो है नहीं, कोशिश करेंगे अपने क्लब को फिर से कमबैक कराने की इस मैच के ऊपर नवीन। बट क्या वो करने दिया जाएगा ओडिशा एफसी? शायद ये उनके लिए कमबैक स्टोरी का जो शुरुआत है वो हो सकता है। मार्च का महीना कटते ही, अप्रैल का महीना आते ही कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे जो चेंजेस है, जो एग्रेशन, जो कॉन्फिडेंस है वो झलकता हुआ दिख रहा है। That's pretty much evident, and we could see that in play. A finesse shot attempt over there with Pele, and I liked his chances. You could go for a few of that a little bit more, but had he great time that, then maybe chances were that it went in. So commencement of the second half, we see Odisha FC, being a lot more better on the ball, despite Chennaiyin FC still having that little possession advantage. Getting KDB up over here. We'll have to see what sort of plays he goes for. He can make those nice long through passes, and there you go, instantly threat averted for Odisha FC. But you could see clearly, the players are not at the right position. So, trying to stabilize the situation before going in for attack. But eventually, Nate really needs to kind of hold on to the ball a little bit more. एंड इस जगह पे सिचुएशन जो है वो कंट्रोल के बाहर जा रहा है। धीरे धीरे करके एक टर्न एंड उसी के साथ फिनिश कर सकते हैं इधर नवीन, एंड इक्वलाइजर दाग सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन वो बनेगा या फिर नहीं वो देखना होगा। देखिए रोडुलित टुवर्ड्स लियोनेल मेसी, एंड रन निकाल चुके ऑलरेडी, बट सार्जिनियो का जो रन है वो टाइम नहीं कर पाए। मेसी भी इधर रन निकालते हुए 120 के आसपास पासेस ऑलरेडी चेन्नई एफसी खेल चुके हैं, बट विद दैट सार्जिनियो टुवर्ड्स रोनाल्डो, ही नीड्स अ फिनिशिंग, एंड यस, विद दैट डिफरेंस इंक्रीज करते हुए ओडिशा एफसी, एंड इसी के साथ साथ 3-1 का डिफरेंस ऑलरेडी बना चुके हैं। ओडिशा एफसी फाइनली शाइनिंग लाइक ए सन। एंड हम जानते हैं ओडिशा का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह है जगन्नाथ मंदिर, उधर सब लोग जाते हैं अपने मन्नत को पूरा करने के लिए, बट फाइनली इतने दिनों बाद ओडिशा एफसी, ओडिशा का जो क्लब है, उनका जो मन्नत है वो पूरा हो रहा है। फाइनली अपने पहले विनिंग की तरफ बढ़ते हुए जिस तरीके से शुरुआत किया गया है, इससे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, एंड बहुत बहुत ज्यादा लाजवाब तरीके से इधर परफॉर्मेंस कहने के करते हुए। बट ऑन द अदर हैंड चेन्नई एफसी, द डिफेंडिंग चैंपियन नवीन, उनका ग्राफ इस बार थोड़ा ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत तो हुआ था ड्रॉ के साथ जिसपे मैच उतना खास नहीं गया था, फिर धीरे धीरे करके एक विन उनको मिला, बट पॉइंट्स टेबल के ऊपर अभी भी वैसे पोजीशन पे नहीं है जैसे पोजीशन पे चैंपियन को होना चाहिए। एंड इधर आखिरी 7 मिनट, क्या ये 7 मिनट काफी रहेगा इक्वलाइजर दागने के लिए? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी इधर ओपनिंग दिया जाएगा ओडिशा एफसी के तरफ से। फिक्सेस फाइनली आपका क्लब, लाइक आप जिधर से बिलोंग करते हो ऑब्वियसली, वो क्लब शाइन करते हुए दिख रहे हैं।
Yeah, an auspicious day, and they will have to another chance in the making. Could still go for a shot with Erling Haaland. The defender comes out to defend, but will not be the case. As What a now goal! Nate just putting Naveen 6 feet under with the fourth goal. And the Odisha fans, they rejoice. Finally, we could see that W coming up on board, and anything could possibly happen. But as things stand, as the moments rise, well, of course, Nate stepping up to the occasion and giving them that crucial win in this BO3. वाओ, बहुत शानदार एक और अटैक के लिए जा रहे थे, बट फाइनली फाइनल विसल आता हुआ नहीं तो शायद एक और मैजिकल फिनिशिंग दिख सकता था, बट यस 4-1 नॉट अ जोक। ओडिशा एफसी कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा मिलेगा। अभी सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज है वो है कोऑप मैच में एटलीस्ट ड्रॉ निकालना, क्योंकि कोऑप में ये भी एक क्लब है जिनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है। तो शुरुआत तो बेहतरीन दे चुके हैं इधर नाइट्स। पाचा नाइट क्या उसको आगे भी कई फोर्ट कर पाएंगे भाग्य के साथ? मुझे तो लग रहा है कि आज भाग्य को भी उनका भाग्य जो है वो साथ देने वाले। देखते हैं। ये जो सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है सारे ओडिशा एफसी के फैंस के मन में, जहन में, कि क्या आज वाकया अपना जो बैड लक का जो रन है वो एंड कर पाएंगे? क्योंकि वाकया इज, I would not say that he's a bad player or something. Had he been bad, he would have never been here at this stage, right? He's beaten so many greats to be one of the parts of eISL campaign this season. It's just that, on multiple occasions, he's just been so unlucky, man. So many shots hitting on those crossbars. But this time, commencement of the new ODI calendar, and seems like our boys have come through. In fact, Nate has come through, and that too with a nice 4-1 victory. And this is exactly how Wagya needs to perform. But you know what? It doesn't really have to even go down to that. If Odisha FC just march on to win the second game, and then it be those 3 points done and dusted, secured in their pockets for this particular club. But hey, TT, Chennaiyin FC, something was off today about Naveen. And it's not just today, it's been going on. And Karmantik has been the hero for the club majority of the times. But what do you think that you're seeing Naveen really missing out on? आई थिंक नवीन जिस तरीके से शुरुआत किए थे सीजन 2 का, वही सेम स्टाइल पकड़ के रख रही है। जो ओपोनेंट वाइज खुद को चेंज करना, वो मुझे लग नहीं रहा कि उतना ज्यादा हो रहा है उनकी तरफ से। सेम स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, सेम फॉर्मेशन, सेम प्लेयर्स, एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा अभी के लिए जो है लाइक ओपोनेंट प्लेयर्स रीड करना शुरू कर चुके कि यही होने वाला है ओपोनेंट पे, लाइक ऑपोजिट साइड पे। तो इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जा रही है, तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। एंड कुछ जो मैजिकल फैक्टर्स है, लाइक नॉट मैजिकल फैक्टर, ऑब्वियसली मैजिक तो अलग बात हो जाता है, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो ऐड ऑन किया जा सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन हो गया, फिर आप इन गेम जाके क्या चेंजेस करते हो। बट फाइनली जो स्कोर कार्ड है वो कुछ इस तरीके से रहा। एंड ये बोलने के लिए हम लोग तरस चुके थे कि ओडिशा एफसी जीत रहे हैं, एंड ओडिशा एफसी फाइनली जीते हैं पहला गेम नंबर 1 4-1 के साथ। लेकिन इसको कंटिन्यू करना होगा, और इसके बाद जो कोऑप मैच है आई थिंक वो होने वाला है आज के दिन का ओडिशा एफसी के लिए सबसे बड़ा एग्जाम, जिस पे उनको खरा उतरना होगा। Oh yes, this is it, right? They have gotten ever so close to finally not just getting 1 point, ended with a draw, but get a 3. But hey, now Naveen's, he's an injured lion, right? And he's got Tika as his best comrade. And we know in dire circumstances, Tick has always been the savior for Chennaiyin FC. And Odisha FC do, anticipate this threat from miles afar. They'll have to put in everything that they've got, at least beginning of new things, a new era,
Odisha FC, Nate has given them that perfect start. All they need to do is just carry forward with the momentum and produce something special, produce something magical, whatever it takes, by hook or by crook. They need to get this W, need to get at least 3 points on board and start fighting for that top six. Because if they keep on losing games, then it will be in those mid phases where we can say that at least we know the competition is now just between those 10 clubs and not Odisha FC included. So finally, a good game from Odisha FC, but it's going to be a tough one against Chennaiyin FC in a co-op, because Naveen and Tikka, they're really good players. We've seen Tikka is one of those players you have to really watch out for those individual moments of brilliance, right? What he does, he gets the ball to maybe R9 or Mbappe and performs a skill move and directly goes into the goal, where the other players we have seen in the eISL go for that extra one pass. So that is something that Odisha FC have to be constantly be on the lookout for, because if they do not do that, they might have to face Tikka's wrath. Otherwise, we know that Naveen, he's got to be the feeder, Tikka has to be the scorer. But for Nate and Bhagya, we have to just hope that that curse for Bhagya ends, and like you have been saying, Bhagya ka bhagya, आशा करेंगे कि ठीक हो गया होगा, अच्छा हो गया होगा, because Odisha FC, they desperately need this one. For sure. And अभी तक शायद कुछ क्लब्स में से ऐसे हैं जो कि अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड आई थिंक कुछ क्लब्स में से नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक एक भी पॉइंट नहीं आए. ये एक लौटा क्लब है जिनके पास एक भी पॉइंट नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने टर्न अप किया है गेम को, एंड वो भी डिफेंडिंग चैंपियंस के सामने, ये इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उड़ीसा एफसी इस बार कुछ अलग करने वाले हैं. तो फाइनली जिस मिशन का सबको कहीं ना कहीं इंतजार था, वो फाइनली बिगिन होता हुआ. लेफ्ट टू राइट चेन्नई एफसी, राइट टू लेफ्ट ओडिशा एफसी, बट सबसे ज्यादा जरूरी ओडिशा एफसी को एनी हाउ एटलीस्ट इधर से ड्रॉ निकालना होगा. हार बिल्कुल भी वो नहीं मान सकते इस एरिया पे, इस जगह पे, इस मैच पे. Oh, they certainly cannot. Losing is definitely out of cards for Odisha FC, because this is the closest they've gone towards getting a victory, and this is where they have to seize this moment, seize the opportunity, and do something brilliant. Like I said, as the kickoff is already there, left to right, we've got Chennaiyin FC in their white, and from right to left, we've got Odisha FC in their black kit. But right now, look at that. That's purely common Tikka, right? Instantly just meddling around with the ball, trying to get in. And this is one of those key factors that Odisha FC always have to keep in mind. Otherwise, one little hit, one little miss, and they're going to get punished. एंड उसी जगह पे देखिए शुरुआती 8 मिनट पे जिस तरीके से कोशिश चल रहा है, एंड स्पेशली फॉर्मेशन वाइज देख के ऐसे ही लग रहा है जर्मन क्रॉस के लिए जाके कर चुके थे इधर रिलीज, बट पहुंच नहीं पाया वो बॉल. एंड स्पेशली ओडिशा एफसी ये मेक श्योर करना चाह रही है कि विंग्स पे जो है वो ज्यादा जगह नहीं दिया जाए, एंड ये एक बहुत ही अच्छी बात है. विंग पे वो बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ रहे. बॉल इस बार चुरा लिया जाएगा टुवर्ड्स मेसी, पर नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल को, जिसके वजह से अभी के लिए काउंटर पे आएंगे. चेन्नई एफसी टर्न करेंगे, फिनिश करेंगे. उसी के साथ पहला गोल मिलता हुआ चेन्नई एफसी को. पैनिक कर गए थे, एंड जिस जगह पे ओडिशा एफसी बॉल लूज की, उस जगह से कोई भी और टीम होता कुछ इस तरीके से ही इधर करते काउंटर अटैक. Yeah, I mean, this is clearly Tikka brilliance in display, right? This is just the way of, this is just the kind of a goal that Common Tikka believes in scoring, and Odisha FC showed a blind eye instantly, right from the very beginning, are a goal down already. Now all the hardships of Nate, that's going to go down the drain if Chennai FC win this one. Got a potential opportunity to create it. I think, was it a finesse shot? Because if it was, you would have seen that curl coming into play, and Lionel Messi does not occasionally miss scoring from that angle. But if it was a normal shot, then you could expect that shot being missed.
And a very nice chance created nonetheless. Odisha FC still showing some resilience, wanting to come back, but again another chance in the making, but foiled. Yes. जिस तरीके से चेन्नई एफसी बार बार बॉल छीन रहे हैं, शायद एक और गोल हम लोग को चेन्नई एफसी की तरफ से दिख सकता है बहुत जल्दी। देखिए जो गलतियां वो बीच बीच में हो रहा है, वो ओडिशा एफसी की गलतियों पे ही कन्वर्जन निकाल रहे हैं चेन्नई एफसी। तो वो गलतियां नहीं करना है। अगर गलती करते रहेंगे, मिस पासेस करते रहेंगे, तो मुश्किलें ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो बहुत केयरफुली डील करने की जरूरत है इस पूरे सिनेरियो से। अगर ये गेम हार जाते हैं, देन आखिरी मैच के ऊपर, आखिरी गेम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि ये मैचअप, ये बेस्ट ऑफ 3 किसके पास जाने वाला है। बट देखिए ओडिशा एफसी बॉल छीने जरूर, लेकिन एक बार फिर से वही मोमेंटम, वही पोजीशन जिधर से कुछ भी हो सकता है। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट! बापे। Okay. Had Vandersar not been there, I think we would have seen a bicycle kick in the making. But regardless, now again Odisha FC on the break with Hakimi. Really need to find that ball roll into a cutback, but no, that does not happen. Easily defended, but Chennaiyin FC, they have been posing constant threat to Odisha FC's defense right from minute 1. And we have seen matters get so close. And Odisha FC, they will have to figure out a way to get back inside the game. And now, Odisha FC, I think at this point, they really need to start just controlling the possession a little bit. Again, just play around the midfields, not go for all these risky passes. I know that's going to make a lot of difference. But a little bit of a build-up is so quintessential over here. And Chennaiyin FC, if they get one more, that's where the pressure hits Odisha FC, and that's where the trouble really arises. Now cannot afford to give Ronaldinho such a space. I think was Naveen on the controller over there. Otherwise would have been a shot that would have gone in. But with Jairzinho, wanted to keep a little bit of possession. Stolen again by Theo Hernandez. As now Odisha FC again getting back onto their attack. Let's see what they can produce out of this one. With R9, a nice cover. A little bit of a room was there for Ronaldinho. But the tackle just came in instantly. And then they were left floundered. पोजीशनिंग देखिए, अटैक पे ऑलरेडी जा चुके हैं ओडिशा एफसी के सारे प्लेयर्स। जस्ट जरूरत है बॉल फीड करने की, बट वो फीड करने के लिए बेलिंगम मौजूद तो है। बेलिंगम टू रोनाल्डो, एंड इसी के बारे में बात कर रहे थे। बॉल फीड करने के लिए प्लेयर्स चाहिए। एम्बापे बीचों बीच टुवर्ड्स बेलिंगम। ओह माय गॉड, अ शॉट बाय वैन डर सार, द सेवियर। वो बिल्कुल भी आज अलाउ नहीं करने वाले ओडिशा एफसी को, एटलीस्ट इस गेम के अंदर फर्स्ट हाफ पे, कि वो गोल स्कोर करे। एक कॉर्नर जरूर कंसीड करेंगे, अभी भी चांस है। रोनाल्डो विद लॉन्ग शॉट, बट नहीं, डिफ्लेक्शन। हाँ, बहुत सारे चांसेस बने, लेकिन कन्वर्जन एक भी नहीं दिखा। Yeah, at least, Odisha FC, they're fighting back, right? They're just not letting Chennaiyin FC walk over them. Still just a single goal lead, can potentially make a comeback. And for all the Juggernaut fans, let me remind you, if Odisha FC can get a draw in this game, that means at least they're going to be opening up their account. So that is something that Odisha FC could also be possibly looking at, if not a win, maybe a draw. And then the next one, it all falls down on Bhagia's shoulder, because Karman Tikka, we know he's a player to be reckoned with, no matter who the opponent is, be it CJ, be it Genocid, be it Vanchaj, he never goes down without a fight. And we have even seen last year in the season 1 of eISL, it was such a roller coaster of a journey for Karman Tikka. Went through personal losses, went through one of his toughest phase of life, and still this lad managed to make a comeback, played the remainder of the tournament, and went on to the grand finals, just missing out on being the champion. But this time, he's got his
his eyes, but Odisha FC a beautiful chance in the making. But sadly could not make anything out of it. And now I think on that yellow controller it is Karmantika who's managed to break free but did not have a lot of passing options, TT. देखिए सेकेंड हाफ शुरू होते ही कहने की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ सिनेरियोस बन रहा था. इधर एक चिप हो गया था बट वैंडसार है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. बट ओडिशा एफसी जिस तरीके से आज खेल रहे हैं हो सकता है कि अभी तक कन्वर्जन मिला नहीं है, लेकिन फॉर श्योर जो प्रेशर है वो बना के जरूर रखे हैं चेन्नई एफसी के ऊपर. एंड ये बहुत कम टाइम देखे हम लोग ओडिशा एफसी की तरफ से. बट फाइनली हकीमी टुवर्ड्स एम्बापे, राइट हैंड साइड से हकीमी का रन ओवरलैप पे निकल चुके हैं. हकीमी कट इन करेंगे, एक पास एंड फिनिश कर सकते हैं रोनाल्डो. ओह नो, एडम मिलिटाओ बहुत क्रूशियल इंटरसेप्शन था जिसके थ्रू इक्वलाइजर को तो रोक चुके हैं. बट काउंटर में जाने की कोशिश, बट हुलिट सुपरमैन जमकर खैर से बॉल पर, इसकी वजह से बॉल एक बार फिर से कंट्रोल में आ चुके हैं ओडिशा एफसी के. Yeah, I mean, I really felt he could have just gone for that shot over then and there only. But this is again a good chance in the making. Virgil van Dijk makes the right run. I think, just anticipating that play became a little bit more, readable. Instantly had an answer. But now we are finally approaching the final 30 minutes of the game. This is where Odisha FC have to turn the fortune wheel and make it theirs. A good cross being delivered, but no, Jude Bellingham for the rescue. And now Ronaldinho on a breakthrough. Well, he has to find that area for Ruud Gullit, who's not making a run attacking wise. But now the ball possession has been stolen away. So for the last 10 minutes, Odisha FC, they've been looking really attacking, showing that intent of trying to find a goal. A little bit of a deflection there with Messi, could be punished. This time directly went to go for a shot, but the player was present, defended, and with Bellingham, the keeper lets it go out for a corner. What a performance. दोनों ही क्लब जिस तरीके से खेल रहे हैं, बहुत शॉर्ट कॉर्नर में भी कैसे मिस हो जाता है वो, आई डोंट नो. लाइक शायद इधर साइकिल प्लस R1 एक साथ प्रेस किया गया था जिसकी वजह से मे बी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था ये पास पेस के चलते. बट हकीमी बॉल छीनने की कोशिश था, बट डिफ्लेक्शन में बॉल गया साइड लाइन के बाहर एंड थ्रो इन मिला चेन्नई एफसी को. चेन्नई एफसी पोजीशनिंग देखिए एक बार, पूरा साइड चेंज किया जा सकता है. हालांकि जार्जिनियो टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, रोनाल्डिनियो नॉटमेक कर चुके थे बट नहीं, बॉडी पुश के चलते बीच से भेद के निकल नहीं पाए. थियो हर्नांडेज, क्या ये एक अटैक बन सकता है? क्योंकि अभी भी ये बिल्डिंग पोजीशन पे है जिधर बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे. देखिए ट्रांजिशन में और ज्यादा फास्ट होना होगा ओडिशा एफसी को. ट्रांजिशन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे जिसकी वजह से इधर पता चल जा रहा है चेन्नई एफसी को कि क्या करने वाले ओडिशा एफसी, जिसकी वजह से पहले से ही डिफेंस अपने स्ट्रक्चर पे आ जा रहे हैं. लेकिन थोड़ा सा होल्ड करेंगे, प्लेयर्स का सप्लाई इंक्रीज करेंगे अटैक पे, एंड उसके बाद पूरा साइड चेंज किया गया हकीमी टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, एंड उसी के बीच में से जार्जिनियो का क्रन था बट नहीं, उनको नहीं दिए. एंड अभी के लिए बैक पास, बट बहुत डेंजरस हो सकता था सिचुएशन. Yeah, I think this moment, Chennai FC do not want to give that opportunity to make any substitutes for Odisha FC, and they could just eat away all the time they can have, because at this point, the onus is on the juggernauts that they have to score the equalizer, right? Chennai FC could just keep the possession for the next 13 minutes and just keep playing on, because they know this is going to be a really crucial one at that, and you cannot afford to lose balls like this with Mbappe, especially when performing a skill move. Usually it's advised that you do not sprint at the same time. Perform a skill move and then get that sprint going in, will give you that added explosive pace. But otherwise, you kind of tend to lose control over the ball and things go awry.
But right now with Mbappe is given a right pass towards R9 with Jude Bellingham will want to take a few shots. We know that Adi Zima loves scoring with Jude Bellingham. But this time, Eder Militao getting a yellow card. Well, will not be clearly happy with it. But with just 10 minutes remaining, Odisha FC finally get to access the bench and make a few substitutes. So we're going to anticipate a few changes being made up there. Maybe an Erling Haaland coming in, maybe even getting Pele on, the usual super subs that we have seen. बट देखिए ये पॉज आई थिंक जरूरत था एंड फाइनली लिया गया है क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस की जरूरत है एंड आखिरी 9 मिनट है इसके बाद और चांस मिलने वाला नहीं है कि ये को-ऑप गेम के ऊपर कम बैक करे तो ओडिशा एफसी उनको अपना सारा का सारा जोर जितने भी स्ट्रैटेजीज है वो भी इंप्लीमेंट कर देने होंगे क्योंकि अगर इधर से ड्रॉ निकालते हैं तो प्रॉपर एक एडवांटेज रहेगा नेक्स्ट गेम पे भी अगर वो एटलीस्ट ड्रॉ भी निकाल ले फिर भी उनको 3 पॉइंट्स मिल सकते अपने बट ये 9 मिनट क्या होगा इस 9 मिनट में क्या एक इक्वलाइजर ढूंढ पाएंगे ओडिशा एफसी अभी तक ओडिशा एफसी का जो कोऑप गेम है उनका कमजोरी रहा है एंड आई थिंक सिर्फ और सिर्फ कोऑप बोलना गलत रहेगा आई थिंक पूरा जो है उनका स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस सब कुछ ही थोड़ा बहुत वीक था बट कोऑप गेम इस आज गोल ज्यादा कंसीड नहीं किए सिर्फ एक ही किए हैं लेकिन इक्वलाइजर अभी तक नहीं ढूंढ पाए तो क्या यही वो टाइम है क्या वो आखिरी 9 मिनट जो अभी चल रहा है इसमें वो एक और गोल दाग के अपने लिए अपने जो 3 पॉइंट उसको और क्लोज लेके आ पाएंगे वही देखना होगा बॉल तो छीनेंगे बीच में से हालैंड का पोजीशनिंग लेकिन वेंडरसन डिफ्लेक्शन बट फिर भी नहीं कर पाए Oh my goodness, what do we say from this situation over here? They're trying tooth and nail, especially Odisha FC. Clearly have been one of the better teams in the second half, attacking wise. But in that final frontier, this kind of tend to fall. And this is where things do not look sunny for them anymore. Chennaiyin FC, however, a comeback into this series. Given they've gotten that chance on final attack, they will take all time on planet Earth that they have right now in trying to build this play up. And look at that, just constantly toying around. Does not matter, the ball goes outside, it's fine, we'll just eat more time. And now look at that. Oh my goodness, this is so frustrating. Could also hook one more in, but there you go, the final whistle blows and Chennaiyin FC level up the series 1-1 with this crucial win. And Odisha FC again left gutted, especially after taking so many goals at the goal, trying to shoot relentlessly, but still failing to succeed. Now it has come under those shoulders of both the players, Karman Tikka and Vagya, who has got that mental strength to see it through. Because now Chennaiyin FC have won a game, Odisha FC have won a game. It is the decider. It's the final individual battle. But getting back to post-game analysis, TT, few things we clearly noticed was Odisha FC still need to work better as a team, right? This was the first goal, beautifully scored, and no doubt on who was the scorer was certainly Karman Tikka. Opened things up, and that was all we could get. But there were so many chances where Odisha, they look threatening, and look at that shot. Oh, that's one of the, I think, saves of the week. At least this time we get to see that one happening. But yeah, I think both these teams have a lot of working to do. After getting off, you can't really say that it was a flawless performance from Chennaiyin FC either, because of course they won the game. But TT, come on, they are the defending champions, and it feels like they're not playing like that. Still, I think a lot of scope of improvement. There's room that they can get better from here. But against Odisha FC, they put it all out. In the second half, I felt they were fairly the ones dominating. But seemed like it was not enough. As we take a look at the scorecard, heavy fine, Chennaiyin FC getting that 1-0
victory right now to make things equalized, and it all comes down to Take It Down taking on Bhagya. For sure, take it down वर्सेस वाग्या. वाग्या की अगर बात किया जाए इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर किए हैं. बाय द वे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं खेले अच्छे. एक मैच शायद जीते थे इसके पहले भी. तो या उनके तरफ से एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगे. बट ऑन द अदर हैंड टेक इट डाउन वो प्लेयर हैं जो कि वंडर्स करते हैं, वंडर्स के लिए जाने जाते हैं. एंड ये कुछ ऐसा कर जाते हैं बहुत सारे प्लेयर शायद वो सोचते भी नहीं होंगे वैसा कुछ. तो देखना होगा लाइक टेका टाउन के सामने वाग्या का आज परफॉर्मेंस कैसा रहता है. हालांकि जो पहला मैच था वो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस तरीके से उड़ीसा एफसी निकाल लेके गए थे, लेकिन कोऑप गेम के ऊपर हम इधर किसी को भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे खेले, क्योंकि अगर चेन्नई एफसी की भी अगर बात किया जाए बहुत सारे मिस पासेस थे. बट हाँ, एक गोल जो था वो नहीं था ओडिशा एफसी के पास, दैट्स व्हाई वो अभी जीतते हुए दिखे. एंड वन मोर थिंग, ओडिशा एफसी लाइक मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा कौन लाइक दोनों में से कोई एक प्लेयर ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों तो और एक साथ एक प्लेयर को कंट्रोल नहीं कर रहे थे. बट जो पास हो रहा था जैसे कि सर्किल प्लस R1, ये जो पास है ये पास आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके थोड़ा दूर कोई प्लेयर है एंड आप डायरेक्टली उसके ऊपर लेके जा रहे हो. लेकिन अगर आपका जो लेफ्ट जॉयस्टिक है वो अगर थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड कॉर्नर पे हम लोगों ने देखा उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके जब पास हो रहा था जस्ट एक पास के थ्रू निकाल सकते थे बॉल को, उस जगह पे एक गलत पास हुआ. तो ऐसे मिस पासेस बहुत क्रूशियल पोजीशन पे हुए. एंड आई थिंक ऐसे ही एक इस पास की वजह से जो गोल है उन्होंने कंसीड किया था. तो पासिंग बहुत ज्यादा जरूरी होगा, स्पेशली सिनर्जी के ऊपर काम करने की जरूरत है ओडिशा एफसी को. Oh yeah, that's really important, and yeah, even I felt like they took a lot of time in building up their plays, but now is the time where we find a decider to this one, to this series. In fact, it has gotten a lot more interesting. It is going to be Karman Tikka against Wagya. Wagya really needs to manifest Nate's energy. That win that he has given, he's got to make it count. He's got to ensure at least, if not a W, at least get a way. Oh, draw there, but no. Right off the bat, you could see Chennaiyin FC constantly have to be on the lookout for such plays. Karman Tikka does not need that extra pass. He's one of those players who's such a clinical striker. Makes you feel like, the Benzema of eISL. I kind of feel like calling him. Anytime he gets the ball, he tends to score. Chennaiyin FC from left to right. Odisha FC from right to left, as Chennaiyin FC in the first 10 minutes have been looking quite aggressive. Yes. And Chennaiyin FC, उनको कोशिश यही करना चाहिए कि इस मैच को वो बाय नहीं हाउ जीत के जाए, क्योंकि अगर ड्रॉ करके भी जाएंगे तो ज़्यादा फायदा उनको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लाइक वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं. राइट टू लेफ्ट अटैक करते हुए दिखेंगे. एंड उसी जगह पे हकीमी के साथ बहुत शानदार एक रन निकाले थे, लेकिन बीचों बीच फंसाया गया. एंड एम्बापे अभी अपने पेस का जलवा दिखाएंगे. एंड राइट हैंड साइड पे रोनाल्डिन्हो ऑलरेडी रन निकाल चुके हैं, एक क्रॉस एंड फिनिश कर सकते हैं. लेकिन नहीं, बॉल कंट्रोल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे इधर. टेक इट डाउन केविन डे ब्रुयना, रूडली टुवर्ड्स रोनाल्डिन्हो एंड बीचों बीच से मौका फिनिश करने की कोशिश था, बट डिफ्लेक्शन शायद. यस, नहीं तो गोल में रहता शायद ये शॉट. Yeah, this could have been, and it wasn't green timed either, but all right. Karman Tikka, that's illegal. I mean, of course it's legal. You could have taken a shot, but that's too far-fetched. How often do you see Jairzinho taking a shot from that angle? But yes, had the defender not gotten there, then things could have been a little tight. And we should expect, even, what am I even saying? We should expect such things from Tikka over here. But now back-to-back good chain passing between the players with Cap De Villa trying to find some space. Wanted to give it to Mbappe, but was not the case with Virgil van Dijk. Passes on towards Mbappe, and before he wants to completely utilize, constantly recycling the ball over where did want to shuffle the play, but Karman Tikka, as if he was just waiting for it. This is a beautiful lob through pass towards Kylian Mbappe, and now could take a shot.
but no, decided to go for a pass instead towards R9, and Bhagya this time being extra too careful and not letting the ball through. भाग्या आज प्रॉपरली रेडी होके आए हैं, कोई भी जगह पे गैप नहीं देने वाले। एम्बापे इनसाइड पे कैप्डेविया मौजूद, बट सार्जिनियो के लिए ये पास, ओहो क्या शानदार पासिंग। एंडिन जिडान तो थे लेकिन उनके पैर से रूडहुली जस्ट छीन के लेके चले गए थे बॉल। एंड अभी के लिए एम्बापे कैरी करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से मौका बन सकता, लेकिन उस जगह पे जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी ओपनिंग नहीं देना चाहते। एंड फुल बैक्स को लेके आज बहुत ज्यादा केयरफुल है भाग्या, कोई भी चांस नहीं ले रहे, पूरा अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करके खेल रहे हैं। जब जब उनको लग रहा है कि हाँ मौका है, तभी वो अटैक में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार वो अटैक पे जाए। तो एकदम बहुत शानदार डिसिप्लिन के साथ खेलते हुए, एंड आई थिंक इसी का ही अभी तक फायदा उनको मिला है। Oh yeah, I think has worked out really well, to be honest. But now it's a beautiful cross, this time towards Ruud Gullit. He had also made the run, but the defense was alert and alarm, and now taking a page out of Carmen Tikka's book. But Edison Morris, oh, such a vital clearance over there. Because had he received, then it would have been 50-50. Would have been that opening goal for Odisha FC. But 35 minutes have already passed into the game. Chennaiyin FC have clearly been the more attacking team over here, have been generating a lot of chances. But Odisha FC showing that vigor, showing that tenacity, not giving up. Bhagya, it's a good start for him. But he needs to find something more than that. He needs to find some goals. Because if Carmen Tikka keeps on creating chances like this, there has to be a point where the lion bites. देखिए इधर मेनली आज विथ कितना ज्यादा कम रखे हैं डिफेंस के ऊपर, एंड इसके वजह से बीचों बीच से तो अटैक बनाना बहुत टफ हो जा रहा है। एंड जब भी कोई साइड से अटैक कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर बिल्डअप हो तो उस टाइम पे पहले से ही उनकी टीम जो एआई है वो भाप ले रहे हैं कि ये इस राइट से या फिर लेफ्ट से अटैक होगा। बट इस बार मौका मिला था लेकिन वैंडेसार के हाथों पे, क्योंकि कोई ऐसा एंगल मिला ही नहीं जिधर से वो प्लेस कर सके। Exactly. तो बहुत शानदार इधर भाग्या का गेम। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट बैक पे कैप्डेविया टुवर्ड्स एम्बापे। एंड देखिए इस बार एक मौका बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर इस बार बना है चेन्नई एफसी का, वो टूट सकता है बहुत इजीली। बट क्या वो टूटेंगे, क्या तोड़ेंगे? मिलेट आओ। No way. I like the preparation from Bhagya coming in. You know, he knows that Carmen Tikka is usually one of those players who does not really shy away from doing the step overs, try to get in through. But this time, I really loved how he just blocked his shooting lane there, right? And shifted him to his other foot where Vandasa was just standing right in front of him. So that is good, presence from Bhagya, because the game has been pretty much end-to-end. Both these players quite leveled in terms of how they've kept possession. But yes, Chennaiyin FC have been the threatening bunch, and Odisha FC, they've been still vying for chances. But like I said, if this sort of a game keeps on going, then we're kind of looking at Carmen Tikka somewhere finding that little bit of an opening and just hitting on that at some point. He's constantly beating the nail on Bhagya's door, and there has to be a point where it sort of breaks open, right? And Bhagya, he's been good defensively. We have seen that he's been winning tackles. He's been showing that composure. Like you said, even the width has been reduced a lot because Carmen Tikka is one of those players, right? We haven't seen him exploit the wings a lot, right? He's usually that kind of a player. Even if he starts building up a play from the wings, he kind of drops down on the cross to the player who's on center. So a lot of things that Bhagya has read well, and has in turn not conceded one, but also hasn't scored. And right off the bat, we see him going for a player lock, instantly just still maintaining the possession. Now we'll swap sides, and where does he go from here? That's the big question, because we haven't seen Odisha FC
He's really good on those attacks. There have been few moments, but this is a good chance. But Edison was ready to thwart off the attack. वाओ, भाग्या को ऐसे खेलते देख के बहुत ही सारा मजा आ रहा है, बट ऑन द अदर हैंड चेन्नई एफसी, उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है हमारा, क्योंकि जिस तरीके से मौका बन गया है, अंदर डिफ्लेक्शन। बाय द वे, इधर वैन डाइक अगर नहीं होते तो काम बहुत सारा मुश्किल होता है इधर वैंडेसार के लिए, लेकिन वैन डाइक वो इजीली किसी को भी एंट्री नहीं देंगे। बट क्या होगा, कौन तोड़ेगा डेडलॉक, वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। लेफ्ट हैंड साइड से एम्बापे, कैप्टेविया, कोशिश था कि एम्बापे को खिलाए, लेकिन चेन्नई एफसी टिकटाउन खुद ब खुद इधर दे चुके हैं। ज़िनेडिन ज़िडान टुवर्ड्स कैप्टेविया, बहुत शानदार मौका था, शॉट ले लेना चाहिए था आई थिंक। Yeah, there have been those instances, right, where Vagia is going for that extra one pass, and that's sort of kind of is the demise of that attacking play. It's not just the first time. In fact, it's the second or the third time we have seen this thing happen. And Vagia needs to understand. He needs to shoot, but really nice slide over there just to get the possession back. And this is a good start into the second half for Odisha FC. For Carmen Tikka, he's got to be on the lookout, because to be honest, at a point, even he might start losing patience. He's usually a very calm player, even much more calmer lad in real life, but now this is a chance. Oh, Odisha FC again still being kept alive with Jairzinho. But Zinedine Zidane battling him with Mbappe, takes a shot. The angle just being a little off as it goes out for a corner. Yes. तो फाइनली एक और मौका मिला है, फिर से बिल्डअप के लिए जाते हुए। वैसे जिडान के साथ थोड़ा लॉन्ग रेंज शॉट भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वैसा दिखा नहीं है। और रोडलीत आज जी जान लगा दे रहे हैं। सिर्फ अगर हम लोग बात करें भाग्या के नहीं, उनके प्लेयर्स, उनका एआई, सब कुछ उनके साथ काम करते हुए नहीं देख सकता मैं। और ये भाग्या भाग्य का भाग्य नहीं बदला. It continues. I mean, out of everybody, your own player getting you that deflection, because I felt this was the nearest he got to scoring a goal, because 70 minutes, folks, has passed into the game. It's been such a tight affair. Oh, Teka scores, and not the goal that Bhagya thought, but surely a sucker punch that hit him and really is going to hurt a lot. You know, the shot was an easy tap in, and that is where you start losing it. Had that breakdown, that situation, a nice slow build up, making no haste and converting that chance, finding the right passes, and look at that room, look at that space given to Mbappe, and he does not miss from there. It took 70 minutes for Chennai FC to try and find an opener, and finally they have it. And Odisha FC again under that rumble. Where do they go from here? Can Bhagya get an equalizer? Can he at least salvage a single point? That's the big question, TT. I think ये गोल कुछ सिमिलर सा था जो हम लोगों को पिछले मैचअप पे दिखा एटीके मोहन बगान के साथ गेम में एफसी गोवा के, तो कुछ उस तरीके का ही था। बट ओडिशा एफसी देखिए, बहुत सारे ऐसे नहीं कह सकते कि मौके नहीं मिले थे, मौके उनको मिले थे। इस पे शुरू पे वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन टिका टाउन को एक मौका मिला एंड उन्होंने उस पे 100% एक्यूरेसी के साथ
कैपिटलाइज किया एंड इस बार मुझे लगता है कि वो गोल का ही इम्पैक्ट आता हुआ, जिसके वजह से इधर मिस पासेस भी हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस इधर थोड़ा डाउन होता हुआ, लेकिन एक गोल भाई यहाँ स्कोर करना ही होगा अगर ड्रॉ भी निकालना है तो पहला पॉइंट हो सकता है इधर ओडिशा एफसी के लिए। बहुत जल्दी ट्रांजिशन करने की कोशिश था बट मिलिटाओ नहीं नहीं करने देंगे। बेलिंगम प्लेयर्स का स्ट्रक्चर अभी सही नहीं चल रहा ओडिशा एफसी का कि वो इधर से आगे जाके प्रॉपरली अटैक कर पाए, तो थोड़ा टाइम लेना होगा, ले भी रहे हैं एंड शायद एक आखिरी पास, आखिरी मौका, आखिरी चांस जो है वो हम लोगों को मिलता हुआ दिखेगा इधर ओडिशा एफसी को एंड क्या उस पर एक कैपिटलाइज कर पाएंगे या फिर नहीं वो देखना होगा। लेकिन बॉल ना पकड़ के इधर शील्ड करने गए थे जिडान को, जो बिल्कुल भी उनके लिए कामयाब नहीं रहा एंड आखिरी 10 मिनट एंड विद दैट एडर मिलिटाओ टुवर्ड्स वर्जिल वैन डाइक, राइट हैंड साइड पे हकीमी, गुहलीत, क्या इधर से क्या कोई भी चांस है कि वो इधर फिनिश कर पाए? नो वे। आज एड्रे मिलिटाओ ठान चुके हैं कि जो कुछ भी हो जाए ओडिशा का एक बॉल मेरे पास से पास नहीं होने दूंगा। Yeah, I think, that was a very slow build up, but eventually it just went down the sewers. And now Odisha FC having another go, potentially one of the final attacks of the game. Offside. And offside. You cannot afford to make mistakes like that. You can see Odisha FC, they are throwing the entire kitchen sink out of the window. We are 3-4-2-1. Can't get more fierce than this. On an ultra attacking, opens up your defense, and I think Karman Tikka will just hold on to his dear life. He knows that he can even counter attack, but for now he just needs to not concede a goal. Odisha FC have have been applying so much pressure, but the composure clearly hasn't been there from Bhagya, and as a result of which, he's not succeeded in finding an opening. And now we'll have to see in the final 5 minutes of the game what can be done. But Eric Cantona comes up a foot birthday icon, 94 rated Cantona. We'll have to see if they could benefit out of this one. But Chennaiyin FC, now look at the run again with Kylian Mbappe, could be the second one, and there you go. It's lights out for Bhagya, and Tikka saves the day, scores the second one, and also the goal that will ensure Chennaiyin FC not just get one but get the whole 3 points. And this is what I said, when you're exposed a lot on your defenses when you go 3-4-2-1 ultra tracking, and there's no comeback from Bhagya from this, not unless they pull off something like East Bengal FC had done against Kerala Blasters FC, if you remember, those 2 goals coming in quick succession. But for now, I think nothing remains in this game, as Odisha FC will have to yet wait a night more before they can think of getting a single point on board. और कब तक ओडिशा एफसी, शायद ये डायलॉग बहुत सही मैच होगा कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता ओडिशा एफसी, क्योंकि ओडिशा एफसी शुरू किए थे 4-1 के विन के साथ, जिधर उन्होंने हराया नवीन को। गोवा मैच पे बहुत सारे गलतियां दोनों ही से हुआ था, इम्पैक्ट बहुत मौके मिले थे ओडिशा एफसी को, लेकिन कन्वर्जन नहीं दिखा। सेम चीज इस गेम पे भी दिखा, कन्वर्जन अगर हो जाता, शुरुआती में प्रेशर बढ़ता और टिका के ऊपर, एंड तब जाके टिका टाउन की तरफ से भी गलतियां हो सकता था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। जिस जगह पे शूट लेना था वो थोड़ा सेकंड पास के लिए गए। तो सिर्फ और सिर्फ भाग्य का भाग्य ही नहीं, उनका शायद थोड़ा बहुत डिसीजन भी आज गलत चलत हो गया, जिसकी वजह से कहने के लड्डू सामने तो आया लेकिन खा नहीं पाए। उनके मुंह के सामने बहुत बारी लड्डू है, बस 7
नहीं कर पाते हैं. That's one of the reasons what Bhagya has been missing out. I mean, he's done works in the right direction. He's worked on those crucial areas. He did not give a lot of chances to Karmantika, to be honest. But towards those end moments, there has to be a fallout, and that is where he fell off. And after scoring that, after conceding that one goal, I think Bhagya had no other choice. It was a desperate attempt. It was like a do or die situation where he had to go full out on his attack. And in doing so, he left his defense completely loose, quite open. We knew that if Karmantika goes on a counter attack, then he's going to punish Bhagya, and that happened on the second case, which was a beautiful goal. Again, Chennaiyin FC, despite Nate giving such a nice start to Odisha FC, despite them winning the first game, the second game did not go anybody's way, and in fact went Chennaiyin FC's way, where they won the match. And let's just clarify and confirm it to the scoreboard. And the third game also, Tikka Town easily. Not easily, I think I'll have to take my words back on that. It was a hard-fought victory. It was a very ratty game, a very sweaty one at that. And Tikka Town still managing to somehow get those 2 goals against Bhagya. And gotta feel bad for Nate. I mean, I think this was one of the best starts that Odisha FC had. But no doubt who the MVP is going to be clearly has to be. Alright, I thought would be Karmantika, but alright. So the MVP has been given to 8 Nates, considering the 4 goals that he scored against Naveen. A little bit of a moral booster for this young lad, making his playing his first time in the eISL. In fact, in season 2, this has to be their 4th or 5th game. But yeah, the first season hasn't been a bed full of roses. In fact, has been a bed full of roses with a lot of thorns. And Odisha FC, I do not know where do they go from here. बहुत सारे जो मौके हैं वो धीरे धीरे करके, जो रास्ते हैं वो भी बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक भी पॉइंट्स नहीं मिला. और जब तक पॉइंट्स नहीं मिलेगा तब तक क्वालिफिकेशन का, प्लेऑफ्स का जो चाबी है वो भी नहीं मिलेगा. सो देखते हैं चाबी ढूंढने के लिए कब निकल पड़ते हैं. ओडिशा एफसी ढूंढने के लिए निकले तो बहुत दिन पहले से ही है, लेकिन अभी तक शायद सही मंजिल पे नहीं पहुंच पाए. तो यस, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं. इसके बाद क्या ओडिशा एफसी काम कर पाएंगे. बाय द वे, काम तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो कि आज एटलीस्ट गेम देख के ऐसा लगा कि यस वो फाइट कर रहे थे. क्योंकि पिछले कुछ गेम्स में अगर हम लोग देखें तो वैसा भी नहीं लग रहा था. लाइक जो गेम उनकी तरफ से आ रहा था उससे देख के लग नहीं रहा था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड एंड ऑल. बट आज दिखा कि यस वो चाहते हैं कि वो जीत के जाए. वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं, बैक टू बैक अटैक्स बना रहे हैं. बट आई थिंक और थोड़ा सा काम बाकी है, वो हो जाएगा तो शायद उनको उनका पहला पॉइंट जो है देखने के लिए मिलेगा. बट क्या तब पॉइंट्स का वैल्यू उतना रहेगा? शायद देर भी हो सकता है उस टाइम तक. Yeah, I think I 100% agree on your point that it's getting into that mid phases of the league stages where they need to start winning games. They need to start scoring points. I mean, playoffs, the goal is still possible, but they cannot let go of matches like this. You cannot just keep on losing like this, and it's gonna hurt. But clearly, Karmantika being the savior for Chennaiyin FC, the Marina Machans would be quite happy about how they played. But that being said, folks, we're finally done with this matchup. We're going to be heading for a short little break, because coming right after is the main event.